Good morning, class. Today we started new topic, microbial assay. This is a very important topic, microbial assay. First, we discuss what is microbial assay. Microbial assay होता क्या है? Microbial assay of antibiotic, specifically, the inhibition of growth under standardized condition may be utilized for demonstrating the therapeutic efficacy of antibiotic. किसी भी एंटीबायोटिक की अगर अपन को थेरेपेटिक इफिकेसी देखनी है तो अपन को एक स्पेसिफिक मेथड फॉलो करनी पड़ती है, उसको अपन यहाँ पे माइक्रोबियल ऐसे कहते हैं। एनी सुटेबल की स्पेलिंग गलत है। एनी सुटेबल चेंज इन द एंटीबायोटिक molecule which may not be detected by chemical method will be revealed by a change in the antimicrobial activity, and hence microbiological assays are very useful for resolving doubt regarding possible change in potency of antibiotic and their preparation. कोई भी एंटीबायोटिक बनाते हैं तो उसका स्पेसिफिक उसमें क्या चेंजेस करने हैं वो अपन केमिकल मेथड से पता नहीं लगा पाते, तो उसके लिए माइक्रोबियल ऐसे सबसे एक अच्छी मेथड कहलाती है माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे, जैसे कि अपन स्पेसिफिकली उसकी पोटेंसी में चेंजेस कर सकते हैं किस बेसिस पे कि उसने कितना डिटेक्ट किया, कितने किल किए बैक्टीरियाज, इस बेसिस पे अपन उसको पोटेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यूज है माइक्रोबियोलॉजिकल ऐसे का। Principle: the microbiological assay is based upon a comparison of the inhibition of microorganisms by measured concentration of the antibiotic to be examined with that produced by known concentration of a standard preparation of the antibiotic having a known activity. Two general methods are usually employed for the microbiological assay of antibiotic. Number one is cylinder plate method. Second is turbidimetric method और ट्यूब मेथड। सिलेंडर प्लेट मेथड को अपन कप प्लेट मेथड भी बोलते हैं। ये मेथड से पहले अपन को तीन चीजें स्पेसिफिकली कॉमनली यूज होती वो बनाने का देखते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ मीडिया। द मीडिया रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म आर मेड फॉर द इंग्रेडिएंट। टेस्ट ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए अपन को मीडिया प्रिपेयर करनी पड़ती है। सबसे पहले देखना है मीडिया प्रिपरेशन कैसे करनी है और उसमें क्या इंग्रेडिएंट होनी चाहिए। Minor modification of the individual ingredient may be made or reconstituted. Dehydrated media may be used provided the resulting media have equal or better growth promoting properties and give a similar standard curve response. Dissolve the ingredient in sufficient water to produce 1000 ml and add sufficient 1 m sodium hydroxide or 1 m hydrochloride acid HCl as required, so that after sterilization the pH is below between 6.5 to 7.5. Preparation of buffer solution. Buffer solutions are prepared by dissolving the following quantities of dipotassium hydrogen phosphate and potassium dihydrogen phosphate in sufficient water to produce 1000 ml. After adjusting the pH with 8 m phosphoric acid और 10 m पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैंने एक टेबल यहाँ पे एडजस्ट किया है बफर नंबर 1 2 3 4 5। अगर अपन बफर 1 की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अपन डाइपोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट K2HPO4 2 ले रहे हैं 2 ग्राम, और पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट अगर अपन ले रहे हैं तो 8। पीएच एडजस्ट अपन को कहाँ तक करना है 6 ± 0.1 और 2 में 16.73 0.5 8 ± 0.1। बफर 3 में अपन डायरेक्ट पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ले रहे हैं 13.61 4.5 ± 0.1। 4 में ले रहे हैं 20 80 एंड 6 ± 0.1। इसी तरीके से बफर नंबर 5 बफर नंबर 6। प्रिपरेशन ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन ने मीडिया प्रिपरेशन कर लिया। मीडिया प्रिपरेशन करने के बाद अपन ने बफर सॉल्यूशन बना लिया। उसके बाद अपन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। टू प्रिपेयर स्टॉक सॉल्यूशन डिसॉल्व क्वांटिटी ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ गिवन एंटीबायोटिक accurately weighed and previously dried
where so indicate in table in the solvent specified and then dilute to the required concentration as indicated, stored in its refrigerator and used within the period of indicated. Table stock solution and test solution of standard solution, then a standard stock solution and test solution. Antibiotic 1, ampicillin assay, P method D, prior drying method, initial solvent, final stock used before number of days, test solution, final diluent, median dose, microgram or unit per ml, incubation temperature, ampicillin set B, method B2, no water 1, final stock solution 1 mg, number of days is then incubate 14 days, final dilution water, test solution के लिए 10 माइक्रोग्राम, टेम्परेचर 32 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी के लिए से एम्फोटेरिसिन बी अगर अपन एंटीबायोटिक लेते हैं तो इसमें अपन थर्ड बी, यहाँ पे अपन सॉल्वेंट ले रहे हैं डीएमएफ, फाइनल स्टॉक सॉल्यूशन में अपन ऐड कर रहे हैं पर एमएल पर 5 ml में 1 माइक्रोग्राम, और इसे अपन सेम डे यूज कर सकते हैं. फाइनल डाइल्यूट B5, मीडियन डोज माइक्रोग्राम 1 माइक्रोग्राम 29 to 31. सेम इसी तरीके से बैक्टीरियासिन, बिलियोमाइसिन. Preparation of test organism. The test organism of each antibiotic is listed in table. Together with its identification number of American type culture collection, ATCC का full form है American Type Culture Collection, and the National Collection of Type Culture NCTC, जो कि इंडियन में इसको एक नंबर दिया गया है, और द नेशनल कलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया, दिस इज VCIB. तो यहाँ पे टेबल है माइक्रोबियल एसे का. एंटीबायोटिक में अपन टेस्ट ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं स्टेफिलोकोकस ओरियस, जिसका ATCC नंबर है 29737 एंड CTC नंबर है 7447. एम्फोटेरिसिन बी में अपन टेस्ट ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं सैक्रोमाइरिस सर्वियसी, ATCC नंबर है जिसका 9763 10716. यहाँ पे स्पेसिफिकली ये जो इतने सारे नंबर्स दिए हैं और बैक्टीरिया के नाम दिए हैं, इसमें से अगर आप सिर्फ 2 या 3 भी याद कर लेंगे तो काम बनेगा. बट ये वाले पार्ट में अगर आप स्पेसिफिक ATCC और NCTC नंबर लिखते हैं तो कंपैरेटिवली दूसरों से अपन कुछ अलग कर पाएंगे और याद रखने में इजी रहेगा और अपना प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादातर सभी बफर सॉल्यूशन बनाने की मेथड बताएंगे, स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशन बनाने की मेथड बनाएंगे, बट स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देगा. ATCC और NCTC नंबर स्पेसिफिकली 2 या 3 के याद कर लीजिए, और स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के लिए कौन सा टेस्ट ऑर्गेनिज्म लेना है. ये जैसे डॉक्सीसाइक्लिन के स्टेफिलोकोकस ओरियस ही लेना है, एम्पिकेसिन के लिए भी स्टेफिलोकोकस ओरियस ही लेना है. तो एम्पिकेसिन और डॉक्सीसाइक्लिन को अगर याद कर ले तो एक बार याद करना है ATCC नंबर और NCTC नंबर, क्योंकि स्टेफिलोकोकस ओरियस का ATCC नंबर है 29737, NCTC नंबर है 7447. तो अब यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं सिलेंड्रिकल प्लेट और कप प्लेट मेथड. Incubate a previously liquefied medium appropriate to the assay with the request quantity of suspension of the microorganism at the suspension to the medium at temperature between 40 to 50 degrees centigrade, and immediately pour the inoculated medium into the petri dish or large rectangular plate to a depth of 2 to 3 mm. Ensure that the layer of medium are uniform in thickness by placing the dishes or plate on a level surface. Using the appropriate buffer solution, prepared solution, concentration of antibiotic to be examined. Apply the solution to the surface of solid medium in the cylinder or cavity prepared in the agar. The volume of solution added to each cylinder or cavity must be uniform and sufficient almost to fill the holes when these are used. Leave the dishes or plate standing for 1 to 4 hours at room temperature or at 4 as appropriate as a period of pre-incubation diffusion to minimize the effect of variation in time between the application of
different solution, incubate them for 18 hours at the particular temperature and 40 to 50 degrees centigrade, accurately measure the diameter or area of the circular inhibition zone and calculate the result. This is the formula. Same ये method अपन पढ़ चुके हैं complete method. Formula is L is equal to 3a plus 2b plus c minus e divided by 5. H is equal to 3e plus 2d plus c minus a divided by 5, where L is the calculated zone diameter for the lowest concentration of the standard curve response line. H, the calculated zone diameter for the highest concentration of the standard curve zone line. C is the average zone diameter of 36 reading of the reference point standard solution. A, B, D, E, the corrected average value for the other standard solution, lowest to highest concentration respectively. Next method is turbidimetric and tube assay method. The method has the advantage of a shorter incubation period. यहाँ पे इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो इंक्यूबेशन टाइम है वो शॉर्टर हो जाता है एज कम्पेयर टू कपलेट मेथड फॉर द ग्रोथ ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म, बट द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट रेसिड्यू or other inhibitory substances affected these assay more than the cylinder plate assay. We have prepared 5 different concentration of the standard solution for preparing the standard curve by diluting the stock solution of the standard preparation of the antibiotic and increasing stepwise in the ration 4:5. Select the median concentration and dilute the solution of the substance being examined. To obtain approximately this concentration, place 1 ml of each concentration of the standard solution and of the sample solution in each of the tubes in duplicate. To each tube, add 9 ml of nutrient medium previously seated with the appropriate test organism. At the same time, prepare 3 control tubes, one containing the inoculated culture medium, another identical with it but treated immediately with 0.5 ml of dilute formaldehyde solution blank, and a third containing uninoculated culture medium. Place all the tubes randomly distributed or in a randomized block arrangement in an incubator or water bath and maintain them at the specified temperature for 3 to 4 hours. After incubation, add 0.5 ml of dilute formaldehyde solution to each tube. Measure the growth of the test organism by determining the absorbance at about 530 nanometer of each of the solution in the tubes against the blank. Same formula, L is equal to 3a plus 2b plus c minus e divided by 5. H is equal to 3e plus 2d plus c minus a divided by 5, where L is a calculated absorbance for the lowest concentration of standard response line. एल यहाँ पे शो कर रहा है एब्जॉर्बेंस, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है लोएस्ट कंसंट्रेशन में, सबसे कंसंट्रेशन में एच वो ऑब्जॉर्बेंस है जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन पे कर रहा है. ए बी ए सी बी डी एवरेज एब्जॉर्बेंस वैल्यू फॉर ईच कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स लाइन लोएस्ट टू हाईएस्ट रिस्पेक्टिवली. फिर आता है नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ विटामिन. Microbiological assay of vitamin is a type of biological assay performed the aid of microorganisms. Many therapeutic agents which either inhibit the growth of microorganisms or are essential for the growth of them are standardized by microbial assay. Principle of microbial assay were developed in 1920. Microbiological assay of vitamin. Vitamin and amino acids are essential for the growth of microorganisms. The basis of this assay is to measure the ability of test organism to utilize the substance being assayed under a proper nutritional condition. The organism requires these growth factors, vitamins and amino acids in micro or nanogram. The response growth of test organism is proportional to the dose amount of factor added to the medium.
Material required for microbial assay of vitamin and amino acid is stock solution, inoculum media, assay medium, standard curve. About vitamin B12 is also known as cyclopholamine, a water soluble. Structure is similar to that where the iron is replaced the cobalt as center of the molecule. It main source like liver, egg, meat, milk, meat, and fishes. Vitamin B12 deficiency cause microlytic anemia, Trishinus anemia. National Research Council USA recommends a daily take of about 5 mg of vitamin B12. विटामिन B12 की कमी से स्पेसिफिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के भी चांसेस होते हैं. Is a chemical structure of vitamin B12, cyclochlopamine. Principle of assay: the test organism selected must be capable of utilizing free cyanocobalamin. A test organism in Lactobacillus leishmani is found to satisfy the requirement. Gram-negative bacilli, non-pathogenic, easy to culture and easily available, isolated from milk, cheese, and other dairy products. Assays performed by using either trimetric or turbimetric method. Precautions: इस विटामिन B12 के ऐसे के लिए अपन टाइट्रीमेट्रिक और टर्बीमेट्रिक यूज करते हैं. Precautions: great care must be taken to avoid contamination. All glasswares must be free from detergents and other chemicals. Glassware must be heated to 250 degrees centigrade for at least 1 hour before use. The whole experiment must be carried out under the proper aseptic condition. Laminar airflow जो अपन ने पढ़ा था, बेंच laminar airflow, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जो भी अपने पास जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो. Reagent required, standard stock solution. pH के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? An accurately weighed amount of cyanocobalamin reference standard is added to sufficient 25% ethanol, resulting in a solution containing 1 microgram of cyanocobalamin per ml, stored in refrigerator. It should be used within 2 months. Further dilution of this stock solution 1 microgram per ml are made as follow. Add 1 ml stock solution to 99 ml of purified water. 1 ml is equal to 10 nanogram. Add 1 ml of above solution to 199 ml purified water. 1 ml is equal to 0.05 nanogram. Test solution to be assayed. Accurately amount of vitamin B12 to be assayed is taken and dissolved in water. क्योंकि आप सब जैसे अपन डिस्कस कर चुके हैं, विटामिन B12 फ्रीली सॉल्युबल है वाटर में. डाइल्यूट HCl और NaOH इज एडेड टू एडजस्ट pH. यहाँ पे अपन डिसॉल्व करेंगे वाटर में और HCl हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे अपन एडजस्ट करेंगे pH अप टू 6. मेकअप अप टू वॉल्यूम विद वाटर. थर्ड, preparation of inoculum. Transfer a loop full of Lactobacillus leishmani from a recent subculture into 2 tubes, each containing 10 ml of sterile culture medium. Composition of inoculum: pH up to 6.8, yeast extract 0.75 gram, peptone 0.75 gram, dextrose 1 gram, potassium dihydrogen phosphate 0.2 gram, tomato juice filtrate 10 ml, sorbitan monooleate solution 1 ml, water up to 100 ml. Incubate for 18 hours to 24 hours at 37 degrees centigrade. Centrifuge the culture. Decant the supernatant fluid under aseptic condition. Suspended these cultured cells into 10 ml of sterile suspension. Cell into 10 ml of sterile suspension of Brussels medium stock solution. Again centrifuge and decant of supernatant fluid. Repeat this for at least 3 times to avoid contamination. Finally, suspend the cell uniformly in 10 ml of sterile medium. Aseptically transfer 1 ml of the suspension of cells to 10 ml of sterile medium and mix. This resulting cell suspension is taken as inoculum.
Procedure for assay for vitamin B12: clean 10 test tube and add in 0.5, 1, 2, 2.5, 3.5, 3, 4, 4.5 and 5 ml of standard cyclomine solution. To each tube add 5 ml of बसल मीडियम सॉल्यूशन. सबसे पहले 10 ट्यूब लेनी है, उन्हें क्लीन करना है, स्लाइस करना है, फिर उन सब में ऐड करना है 0 से लेके 5 ml तक, जैसे 0.5, 1, 2, 2.5, 1.5, 3, 3.5, 4, 4.5 and 5 ml. Standard cyclobine solution, and to each tube add 5 ml of basal solution. Volume of each is adjusted to 10 ml by water. In other 4 test tube add 1, 2, 3, 4 ml of test solution which is to be assayed. To each of this also add 5 ml of basal medium stock solution and adjust volume to 10 ml with water. Sterile all test tube in autoclave at 121 degrees centigrade for 15 minutes. Cool the test tubes and room temperature. Inoculate a drop of inoculum prepared for Lactobacillus lachrymni. Incubate the test tube for 64 to 72 hours at temperature range of 30 to 37 degrees centigrade. After incubation period, titrate contents of each test tube with 0.05 norm NaOH using bromomethyl bromethymol blue as indicator using green color. Record all titrate rating clearly. Interpretation: determine the average of titration values of each level of both standard and test solution. Plot a graph considering average titration value of 0.05 normal NaOH against concentration of standard cyclomine solution. A linear graph is obtained by interplotting the standard curve. Determine the concentration as activity per ml of vitamin B12. From the graph, the concentration of test solution of cyclomine is found and reported. तो यहाँ पे अपना टॉपिक खत्म होता है माइक्रोबायोलॉजिकल एसे. इसमें अपन ने दो मेथड स्पेसिफिकली देखी, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे फॉर एंटीबायोटिक एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एसे फॉर विटामिन B12 या विटामिन और अमीनो एसिड के लिए. वहाँ पे अपन ने यूज़ की कपलेट मेथड, यहाँ पे अपन यूज़ कर रहे हैं टाइट्रोमेट्रिक और टर्बिडिटी मेथड. दोनों का यूज़ बताया मैंने. एंटीबायोटिक में अपन को कोई भी चेंजेस देखने हैं या फिर उसका अपन को इफेक्ट देखना है तो अपन यहाँ पे केमिकल मेथड से ज़्यादा इस पे भरोसा करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल एसेस पे. थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जो भी इसमें कंफ्यूजन रहेगा वो स्टार्ट करेंगे.